Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. I welcome all of you to my YouTube channel. Today we are going to start another paper that is semantics, and we are going to start our first question of semantic. In this lecture, we will discuss what is semantics, the systematic study of meaning, the nature of language, the individual, demonstrating semantic knowledge. So let's begin. Semantic is the branch of linguistics. Semantic linguistics की एक branch है that deals with meaning, जो deal करती है meaning के साथ. In the simplest words, semantics helps us understand what words, कि कौन से words, phrases and sentences mean, कि words, phrases और sentences का meaning क्या होता है. For example, when someone says the cat is on the mat, we know this sentence. We know this sentence means that a cat is sitting or lying on a mat. This meaning is not just based on the words themselves, but also on how the words are put together. Some semantics tries to answer questions. Semantic हमें answer देने की कोशिश करती है. Like, how do we know the meaning of a word? कि word की meaning हमें कैसे पता चलते हैं? How we how do we understand the meaning of a sentence? एक sentence का meaning हमें कैसे पता चलता है? We have never heard before, जो हमने पहले नहीं सुना होता. How do different words relate to each other? एक दूसरे के साथ words कैसे relate करते हैं? In short, semantics gives us tools. Semantic हमें वो tool देती है to understand and explain the meaning in language. It is not just about vocabulary. ये सिर्फ vocabulary के बारे में नहीं है, dictionary definitions. It is also about logic, relationship, and systems behind meaning. Semantics is very important in communication because without understanding the meaning, we cannot understand each other. The systematic study of meaning means that semantics studies meaning. कि semantics में meanings को study किया जाता है in an organized and scientific way. Organized और sciencey तरीके से. Just like grammar has rules, जैसे grammar के rules हैं, meaning also has its systems and patterns. Meaning के भी systems अपने हैं, pattern हैं. For example, in English, the sentence Ali loves Sarah has different meanings than Sarah loves Ali, even though the words are the same. This shows that meaning is connected to word order. कि जो meaning होते हैं वो word order के साथ connect करते हैं, context के साथ, sabak के साथ, and grammar. Semantics, semantists, जो semantics के माहिर होते हैं, semantics people, semantics के माहिर who study semantics looks at different levels of meaning, word meaning, lexical semantics, sentence meaning, and meaning in large text. They study synonyms, यानी जिसके similar मीनिंग होते हैं उसको स्टडी करते हैं, और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स को, हेमोनिम्स words that sound the same, वो वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है बट हैव डिफरेंट मीनिंग, एंड पोलिसीमी, ठीक है, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग जिनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल, द वर्ड बैंक कैन मीन अ रिवर बैंक or a financial institution. By studying all these parts, semantic becomes a complete system that help explain how meaning works in language. So the study of meaning is not random. Meaning की study random नहीं है. It follows a clear structure and method. The language, the nature of language is deeply connected with meaning. Language की nature उसका बड़ा गहरा connection है meaning के साथ. Language is not a system made up of sound. लैंग्वेज को ऐसा सिस्टम नहीं है जो साउंड से बना हो, वर्ड एंड सेंटेंस that people use to communicate. But what makes language powerful is its ability
जो चीज लैंग्वेज को पावरफुल करती है वो लैंग्वेज की एबिलिटी है टू कैरी मीनिंग। किसके मीनिंग होते हैं? वर्ड्स आर जस्ट साउंड्स। वर्ड जस्ट साउंड होते हैं, आर लेटर्स अनलेस दे आर कनेक्टेड टू मीनिंग, जब तक कि इनका कनेक्शन मीनिंग के साथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ट्री इज जस्ट अ साउंड। वर्ड ट्री सिर्फ एक साउंड है, अनलेस वी नो इट refers to a tall a tall plant with branches and leaves. Language can express not only facts, language ना सिर्फ facts को बयान करती है, but also emotion, questions, orders, ideas, and much more. The nature of language also includes how it changes over time, कि वक्त के साथ ये change कैसे होती है। New words are added, नए words add होते हैं, old words disappear and meaning shift, meaning change होते हैं। For example, the word cool used to mean, इसका मतलब हुआ करता था cold, but now it can also mean stylish or nice. Language is also symbolic. Words are symbols and their meanings are learned, not natural. Different languages use different words for the same things. So the nature of language, the language की nature है, shows us that meaning is not fixed. कि meaning fixed नहीं होते but flexible, changing and shaped by culture and usage. Language and the individual means, language और individual का मतलब है that every person uses, कि हर बंदा इस्तेमाल करता है, understand language in their own way based on their experience, background, education and environment. For example, a child may say doggy while an adult says dog, but both refers to same animal. And individual knowledge, एक बंदे का knowledge of language helps him uh, here it's him helps him, इसकी help करता है make sense of new words or sentences they have never heard before. Semantics हमारी help करती है understand how individual know and use meanings in real life. Sometimes people use the same words but mean different things depending on their feelings or situation. For example, the sentence I am fine, ये sentence कि मैं ठीक हूँ can mean different things. Truly fine, hiding sadness or even annoyance या नाराजगी को छुपाना, even on the speaker tone and context. So semantics looks at how meaning is created, कि मीनिंग क्रिएट कैसे होते हैं, not just by the language system but also by the person using the language. It also shows how individuals make choices in words, styles and meaning while speaking or writing. This makes communication rich and ये communication को rich भी करता है and varied, और उसको different भी करता है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं जी। डिमॉन्स्ट्रेटिंग demonstrating semantic knowledge means showing that a person understand the meaning of word, कि एक बंदा वर्ड्स के मीनिंग को समझता है and how to use them correctly in sentences, वो ये समझता है कि सेंटेंस में उनको कैसे यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, if someone knows that bark can mean the sound of a dog, कि bark का मतलब है एक डॉग की आवाज, makes or the outer covering of a tree, they are showing semantic knowledge. Another example is showing that he ate the cake. Makes sense, but the cake ate he does not. ये sense नहीं बनाता. This shows that the person understands not only word meaning but also grammar rules that help create proper meaning. Teachers, linguists, and language learners often test, वो अक्सर टेस्ट करते हैं this through vocabulary exercises, sentence building, and reading comprehension. Semantic का knowledge also include, उसमें शामिल है understanding metaphors, कि इस तारा का कैसे इस्तेमाल करना है, idioms का for example when someone says time is money, कि time जो है ये money है, they are speaking literally, तो इसको वो
अलामती अंदाज में बोल रहे होते हैं, बट वी अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन। टाइम इज वैल्यूएबल, इसका मतलब होता है कि टाइम कीमती है। वी डिमॉन्स्ट वी सो डिमॉन्स्ट्रेटिंग सिमेंटिक नॉलेज, सिमेंटिक नॉलेज का जो इजहार है इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग मीनिंग। इसका मतलब सिर्फ मीनिंग को जानना नहीं है, बट अबाउट यूजिंग देम करेक्टली। उनको उनमें उनको जानना कि कैसे करेक्ट उनका यूज करना है, logically and creatively in real life communication. In conclusion, semantic is the key. Semantic एक ऐसी की है to understanding कि हम समझते हैं how language carries meaning, कि language में meaning कैसे होते हैं। It is not just about learning, ये सिर्फ learning के बारे में नहीं है, the meanings of words, but about understanding how words, grammar, and context work together to create meaning. थ्रू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मीनिंग, मीनिंग की अगर हम सिस्टमैटिक स्टडी करें, वी लर्न दैट लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, ये लैंग्वेज बड़ी पेचीदा है, एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम भी है इसमें। द नेचर ऑफ लैंग्वेज शोज अस दैट वर्ड्स आर सिंबल्स, के वर्ड सिंबल्स हैं दैट कैन चेंज, जो चेंज भी होते हैं एंड ग्रो भी करते हैं। ईच इंडिविजुअल यूज लैंग्वेज इन हिज ओन यूनिक वे, हर बंदा अपने तरीके से लैंग्वेज को यूज करता है, बट स्टिल फॉलोज द जनरल रूल्स ऑफ मीनिंग। लेकिन मीनिंग के जो जर्नल रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग सिमेंटिक नॉलेज को शो करके, पीपल शो दे कैन अंडरस्टैंड, वो शो करते हैं कि उनको समझ है और वो यूज कर सकते हैं लैंग्वेज को इफेक्टिवली। सो सिमेंटिक इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर लिंग्विस्ट, सिमेंटिक सिर्फ लिंग्विस्ट लिंग्विस्ट्स के लिए, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए, लिंग्विस्ट के लिए ना सिर्फ ये यूजफुल है, सॉरी इट्स जस्ट स्लिप ऑफ टंग। जो लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, लिंग्विस्ट्स and researchers. It is a part of our everyday life whenever we speak, write, read, or listen. So that was our question on what is semantic, and we have discussed whole chapter number 1. We have covered what is semantics, the systematic study of meaning, the nature of language, language and the individual, demonstrating semantic knowledge. I'm sure that you have learned this easy lecture. I request all of you to subscribe to the channel, share it with your friends, family members, and also like the video, share your comments as well. Thank you very much.